Hey guys, let's start. Hey guys, we're back. So, कल रात वाली स्ट्रीम में हमने दो क्वेश्चंस कर लिए थे एंड दे वर फेयरली इजी. इतना कुछ इशू हुआ नहीं, तो काफी इजीली सॉल्व हो गए थे. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. यू कैन refer back these two questions, palindrome linked list or move no not move zeros and symmetric tree from the last stream from yesterday. Now we'll move on to the next question. Missing number. Okay, let's open this. इंटरनेट इतना स्लो है क्या? Why is the internet so slow? Am I connected to the 5 gigahertz? Why is the internet so slow, man? Just a second. Okay, let me check. हाँ, सब इंटरनेट लगता है आज ही यूज कर रहे हैं. काफी स्लो चल रहा है ये. ओके. नो, सो somehow will manage because ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसमें कोई इशू नहीं है. ओके. Now this problem says given an array nums containing n distinct numbers in range 0 to n. Okay. Return the only number in the range that is missing from the array. Okay. So we have an array. We have an array in which contains number from 0 to n. So if the length of an array, no, it's a fairly simple explanation. So what happens if there is an array with length n is equals to, for example, let's say 6. So what will happen? It will have 6 elements like this. I am putting it in a sorted order, but it can be unsorted as well. But instead of this, there will be one number missing. Okay, so anyone from 0 to 6, any one number can be missing. For example, in this, there are 6 elements, but 0 is missing. And if I put 0 here, there are 6 elements, but 1 is missing. So similarly, it can be in any order, and any one number can be missing. So, okay, so what do we have to do? We have to find that missing number, right? Okay, so uh, I think I know how these questions work, right? So since the catch for these questions is that uh, the elements inside the array are from 0 to n. That means the values range from 0 to n. So since 0 to n, signifies 0 to n signifies the somehow we can manipulate them in terms of indexes. So if we somehow uh, if we somehow manage to if we somehow manage to manipulate our array in a way that it indicates what number is missing, we can try. For example, uh, uh, we will talk in examples, right? So yeah, this array is fine because it's big enough for an example. So in this case, the value, oh, okay, so the length is 9, n is equals to 9.
So there is one element missing. We can find out. That's okay. I think 8 is missing from this, but it's okay. So uh, what we can do is, if I'll give you an hint. So we have 9 here. So when we'll start iterating from this, so uh, what we can do is we can uh, double the double the value at 9 minus 1th index. But the issue is if it is 0, right? How will we manage it? The Since it can contain 0, we cannot do 9 minus 1th. So this is 0th index. 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. So these are indexes. Okay. Now, if I say 9 minus 1th index, so it will update this 6 minus 1. Everything else is fine, but for 0th index, I'm not sure how we'll handle the case. That's the issue. Mm, how we can do that? Uh, 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 mm, 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 0th, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ninth index to exist करता ही नहीं है. So ninth index is not there. So how will manage to manipulate the array? That's the question. मीन्स हम लोग जीरोथ मैनिपुलेट कर लेंगे, 1 कर लेंगे, 2 3 4 है, 6 7 कर लेंगे. uh, one number is missing, right? uh, 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 uh. We have to think about it. ये क्वेश्चन दिखने में आसान लग रहा है, बट मे बी इसमें कोई और टेक्निक यूज होगी. सो हम रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट लेट अस थिंक अबाउट इट गाइस. यू आल्सो थिंक. hmm how can we so अगर नाइन्थ एलिमेंट नाइन्थ इंडेक्स इसमें एग्जिस्ट करता ही नहीं है, सो दैट्स अ प्रॉब्लम. बट अगर मैं एक इंडेक्स माइनस करने का ट्राई करूंगा, सो दैट विल कॉज एन इशू फॉर जीरोथ इंडेक्स, राइट? सो इसमें कोई और फॉर्मूला लग जाएगा, आई गेस. आर बी थिंकिंग टू मच. हम इसका सम कर सकते हैं एंड देन, हाँ, आई थिंक दिस कैन वर्क, राइट? So sum from 0 to n is equals to n minus 1 by 2, isn't it? Am I incorrect? So we'll sum the element and but- and subtract it from this value, because this value will be larger. So for example, we have 9, right? So 9 into 9 minus 1 by 2, that is uh that is 8 into 9 is equals to 72 by 2, that is 72 by 2, 36. 36, right? 36. So the sum of the elements, the element of this array should be 36, but technically it will not be 36 because one of the element is missing. So we'll run a sum for this, so that let us test 1 7, that is 8, 8 5 13, 1 7 8 5 13, 3 16, 2 18, 4 22, 6 28, and 9. 6 28 and 9 is 35. Huh?
Are we doing something wrong? I think we're doing something wrong. Let us try to use calculator. हम लोग मैथमेटिकल प्रोडिजी नहीं है तो हो सकता है मैं मिस कर रहा हूँ, मैं भी सो के भी उठाऊँ. ओके, सो 9 plus 6 plus 4 plus 2 plus 3 plus 5 plus 7 plus 1. So it is 30, 37. Am I doing something wrong? मैं कुछ गलत काउंट कर रहा हूँ क्या यार? 9 into 9 minus 1 by 2. n plus 1 by 2 होता है, n minus 1 by 2 होता है. I think it's n plus 1 by 2. हाँ, पेन एंड पेपर लाना पड़ेगा यार, सॉरी. पेन पेपर ही काम आता है. So, right. Uh, n plus 1 by 2. So that is total there are 9 elements, right? 0 to 9. 0 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 9 into 10 by 2, that is 45, right? तो 45 आना चाहिए एंड अभी 37 आ रहा है. ओके, दिस शुड बी n plus 1, राइट? हाँ, तो ये हो जाएगा 90. सो ये आ जाएगा 45. नाउ you will minus, you will subtract 45 from 37 that we got from here calculator is equals to 8. So we got a missing number 8. So I think we are correct, right? So ये काफी सिंपल था, हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स सोचने लग गए. तो many times क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं बट हम कॉम्प्लेक्स थॉट में जाके उनको उसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं. सो लेट अस राइट आवर फंक्शन हियर. ओके, let sum is equals to 0 for let I 0 nums dot length I plus plus ret sum plus equals to nums I. ओके, सो ये हमें सम दे देगा. नाउ we will return, we have to go with nums length, right? तो मैं मैथ डॉट पूरी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये this will always be a you can say non-decimal number, or will not get answers in fractions, right? So we'll just subtract this from sum and we will return it. Okay, let's try if we hit the mark or what, if something is wrong. Yes, our case is accepted. Now, so basic I think हमारा code सही है, but we'll see the extreme cases. So nums dot length n is equals to nums dot length, that's fine. Value of n lies between 1 to 10 to the power 4. So at least one element रहेगा, that means हमारा nums 0 भी हो सकता है. So let's check for 0. Okay, हमारा अगर इफ इनके केस 0 क्या होगा? सो लेंथ हो जाएगी इसकी 1 एंड सम में ऐड हो जाएगा 0 एंड सम की वैल्यू 0 ही रहेगी एंड 0 into 0 plus 1, 0 into 0 add 0 minus 0 return, it will return 0, which is a correct answer or what? So in case of 0 n की लेंथ अगर 0 हुई, so we what are we were trying to do?
Okay. Okay. It's a range given, right? So if if uh, can we assume? I'm guessing according to this question, we can always assume that uh, we have a range where हमारी values almost always 0 1 2. Okay. ओके सो हमारे नम एंड ये लेंथ पे डिपेंड कर रहा है राइट सो इवन अगर हमारी जीरो है ना इसकी वैल्यू सो अगर हमारी लेंथ नम्स की लेंथ वन आ रही है तो हमारा दो एलिमेंट होने चाहिए सो इन दिस केस हमारा आंसर आना चाहिए वन एंड हाउ वी आर गोना अचीव दैट इफ एन इज इक्वल्स टू जीरो हम इसमें बेसिकली डाल सकते हैं इफ एन आफ्टर हमने लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं इफ n is equals to 0 we can simply return 1 right because वन इज वन मिसिंग होगी इसकी लेंथ वन है टू के केस में टू मिसिंग हो जाएगा आई गेस सो हमारे क्योंकि हमारा सेकंड वाले केस में आंसर सही आया तो आई गेस में हमारा केस पकड़ पा रहा है ये चीज बट फर्स्ट केस कैच करने के लिए मैंने ये चीज दे दी है बिकॉज आई एम नॉट श्योर इफ इट विल बी एबल टू कैच इट ओके लेट अस ट्राई टू सबमिट इट या इट्स फाइन इट रन फाइन बहुत अच्छा रन टाइम नहीं है आई थिंक वीर इन मिड समवेयर इन मिडिल नॉट श्योर इससे और बेटर रन टाइम क्या हो सकता है इसका यार uh, ये सिर्फ एक इफ केस है तो इसको हम रिमूव करेंगे तो ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं रन टाइम पे सो ट्रेड ऑफ हमारा almost बराबर है सो यू कैन सी राइट हमारा मेमोरी भी ठीक ठाक आई है तो हमारा रन टाइम भी मिड में ही आया है देयर्स वी हैव not we have you should know that always there is a trade off between runtime and memory usage so if you will improve the runtime too much memory usage बढ़ जाएगी and it will go down and if you improve the memory usage runtime down हो जाएगा so it's always a trade off हर केस में शायद अप्लाई नहीं होता देयर मस्ट बी सम स्पेशल केसेस जिसमें दोनों बेटर हो सकते हैं बट या दिस इज अ जनरल idea that we hear about coding so that's fine I think our answer is to it's okay let us try अगर हम ये केस निकाल दें so I'm not sure if it will be able to handle this but let us try okay yeah it was able to oh and we see very good improvement in the runtime also. It's yeah, it crossed 85. Last time it was 54. Okay, so that case was unnecessarily added because हम थोड़ा सोच रहे थे क्या बता वो पहला केस हैंडल ना कर पाए but it's fine. Okay, nice. Let's move to the next question. Palindrome number. I think lead code premium लेना पड़ेगा यार ये बहुत स्लो चलता है. Okay, given an integer x, return true if x is palindrome and false otherwise. So we have to check if a number is palindrome. Uh, we have done this यार ये तो फर्स्ट ईयर वाले क्वेश्चंस हैं यार आई थिंक वी हैव डन राइट और नॉट हमने स्ट्रिंग चेक किए हैं इफ इट इज पैलिंड्रोम और नॉट बट नंबर्स ओके this is not an easy question or what am I overthinking it or what okay so x is equals to 121 so the basic idea behind palindrome so we'll be back to the basics so if this is a number okay 121 basic idea is the values from opposite ends should be same तो इसमें same है and this is palindrome but how do we compare it how do we get to the point that we know that first digit और last digit same है so for that to get so last digit तो हम बहुत easily निकाल सकते हैं using mod so uh, if we if we do what last digit कैसे निकालेंगे so
हम लोग अपना टेस्टिंग प्लेग्राउंड यूज करते हैं। ओके, so console.log, so if you do 121 mod 10, ये मेरे को चीज़ें याद नहीं है, इसलिए मेरे को ये सब देखने कट करनी पड़ती है, बिकॉज ये फर्स्ट ईयर में सब किया था किस ज़माने में। बट या लेट्स सी, सो mod 100, if we will we have to do I think mod 10 only, so it will return 1, right? So ये वाली वैल्यू mod 10 पे रिटर्न करेगा, mod 100 पे ये दोनों रिटर्न कर देगा, 21 आई गेस, यस, एंड mod 1000 पे पूरी वैल्यू रिटर्न कर देगा। ओके, सो लास्ट वैल्यू हमारी इससे निकल जाएगी, जो एंड वाली डिजिट है। ओके, एंड फर्स्ट डिजिट कैसे निकलेगी, दैट वी नीड टू चेक। ये निकलेगी हमारी, आई गेस मॉड 1000 करेंगे तो ये तो फिर पूरी डिजिट ही बाहर आ जाएगी ना, 121 ही हो जाएगा। आई थिंक इस ये ऐसे निकलेगी कि यू विल हैव टू डिवाइड द divide the last digit by the 100, by the uh, 10th power of it, so it 10 to the power 2 में आ रहा है, so if we, हमें इसमें math dot floor यूज करना पड़ेगा, because this can give a decimal, so 121 by 100 will give us 1, right? And if we compare these two values, तो ये true आएगी, that's okay, but the issue is how do we get to this number, that this is 100, this 121 is in 100, is in 100th range, so uh, we have a range like, you know, ones and tenths and hundredths, thousands, so to check if this number is in the range of hundreds, how do we know that? हम एक बार रेंज चेक करते हैं, व्हाट आर द रेंजेस ऑफ नंबर, ये तो बहुत ज्यादा रेंज है यार, सो वी कैन नॉट यूज अ लूप फॉर लूप काइंड ऑफ थिंग्स टू चेक कि ये किस रेंज में आ रहा है, तो ये वाली चीज पॉसिबल तो नहीं है। हाउ डू वी नो 0 to 120 121, right? देखो, सबसे इजी वे तो ये हो सकता है कि हम एक एक एलिमेंट इससे निकालते रहे एंड हम एक एरे में स्टोर कर दें, एंड इफ देन वी कैन डू अ कंपैरिजन फॉर दैट एरे, एंड अगर उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम आ गए, जो पैटर्न हम सर्च करते हैं फॉर पैलिंड्रोम, देन इट विल बी पैलिंड्रोम, ये सबसे बेसिक है। बट कैन इट वर्क, कोई कैसे फॉलो अप किया, कुड यू सॉल्व इट विदाउट कन्वर्टिंग द इंटीजर टू अ स्ट्रिंग? यस वी कैन, बट वो भी हम एरे में शुरू करेंगे तो इट्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग, राइट? अगर हम इवन विदाउट कन्वर्टिंग इट इनटू अ स्ट्रिंग, इवन हम इसको अगर एरे में सेव करें तो बात वही पड़ जाएगी, सेम टू सेम, बिकॉज in both string and array we get the leisure of being able to compare uh, elements by their indexes, right? So can we do it better than this without using some arrays, or converting this to string? Can we do? We have to think about that. So like I was talking about it, by using this, by modding it with 10, हम लास्ट के एलिमेंट निकाल सकते हैं एक एक करके, तो दैट इज ओके। बट द इशू दैट वी आर थिंकिंग इज, दैट वो जो हम नहीं सोच पा रहे इज दैट हम फर्स्ट वाला एलिमेंट कैसे निकालेंगे इसमें से। सो यहाँ तो मैंने इसको 100 कंपेयर कर लिया, बिकॉज आई कैन सी दैट 121 इज इन द रेंज ऑफ हंड्रेड्स, सो आई एम नॉट श्योर कैसे कर पाएंगे हम ये चीज। हाउ वुड आई नो, ये चीज थोड़ी रिसर्च करनी पड़ सकती है हमें इन मैथ, राइट? So
not have my phone. Let us try to Google it. Okay. How do I how do I take out the most significant digit in a number? जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट जावा किसी में भी कर लें, वो तो हम कन्वर्ट कर लेंगे अपनी लैंग्वेज में. बट लेट्स सी, हमें मिला है लीड कोड, नॉट कोड, स्टैक ओवरफ्लो. सो व्हाट इज दिस गाइस थिंग, यूज द मॉडुलो ऑपरेशन. या ये पता है मेरे को, ये मेरे को पता है, बट हाउ द इशू इज हाउ the issue is how would we know that this is in the range of hundreds, right? मॉड्यूलो ऑपरेशन ने यार क्या सोल्यूशन दिया चमन लाल ने. यूज नम परसेंट एंड इट विल प्रोवाइड द नंबर बिटवीन 0 to 99, that is remainder by, this is basically 2D. This is not a verified answer, this is a verified answer. Okay, okay, this guys has given a, just a second guys, I will be back. Can we pause it? I don't think we can pause the stream, but it's okay, I will be back. Oh my god, sorry for the delay guys, I am back. ओके सो हम लोग थे, या वी वर ट्राइंग टू फाइंड आउट हम लोग इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट कैसे निकालेंगे, राइट? सो निकालने का तो वो बहुत सिंपल होता है तरीका, बट यू नो हाउ हाउ वुड बी गेट इट आउट फर्स्ट. द प्रॉब्लम इज हाउ वुड वी नो दैट ये कितने पावर में है, ये अगर 100 पावर में, 1000 में, बट कितने में है ये हमें कैसे पता चलेगा? हाउ कैन वी फाइंड दिस आउट? क्या हमें कुछ मिला था ना शायद से, आई थिंक आई मिस्ड checking that out. Okay, so इसने बोला है the number of significant decimal digit can be determined by log 10, that is then we generate the integer power of 10 value is to remove the MSD by modulo arithmetic. 10 floor log 10 I. Let's try this. I'm not sure if it will work. Okay, हम इसको अपने प्लेग्राउंड में ट्राई कर सकते हैं. सो हिट हियर. सो हमें 121 का निकालना है, सो हम आई की वैल्यू दे देंगे 121. ओके, सो लेट्स सी क्या आता है. ओह, कुछ तो एरर आया. मेरे भाई ने कुछ तो गलती की है यहाँ पर, या मैंने ढंग से आंसर चेक किया नहीं. इंक्लूड मेथड, दिस इज जावा मैन. ओके, बट लेट्स सी इसने क्या करने का ट्राई किया है. तो पावर 10 टू 10 की पावर उसने वो कर दी log ऑफ आई, log बेस 10 ऑफ आई, जो भी फ्लोर वैल्यू है. So do we have logarithms in JavaScript? Math log we have, I think, right? This is not a recommended website, the WC schools, but yeah, we can check out, right? So it's math.log we have something, okay? So if in our playground we instead of log 10, so इसने वो कैसे किया था with a base log 2, math.log10, we can do this, right? क्योंकि इसने log 10 बेस बोला था, math.log10. ओके, और ये भी हो जाएगा math.floor. ओके, नाउ दिस इज नॉट पावर, नाउ वी हैव टू चेक, मेरे को याद नहीं है ये सब चीजें.
power function script math dot power right. ठीक है. So let us try this power int power. We do not need to do this int power. We will do math dot power. Okay, number of this is number of. Okay, this is okay. Okay. ओके. कुछ तो इशू आया. ओह, मैं इसका वो हटाना भूल गया. तो लास्ट हो जाएगा ये. 21 दिया इसने. तो ये रिमेनिंग वैल्यू दे रहा है. मेरे को फर्स्ट सिग्निफिकेंट चाहिए. ये मैट डॉट पावर में कर रहा है 10 एंड देन मैट डॉट फ्लोर फॉर दिस वैल्यू i% i% दिस. परसेंट नहीं चाहिए मेरे को. चाहिए डिवीजन में राइट. 1.21 बट इसको भी मेरे को मैथ डॉट फ्लोर करना पड़ेगा. मैथ डॉट सो वी आर एबल टू गेट. बट एक बारी बार फंक्शन समझते हैं यार ये क्या चीज है ये. ओके. We have to some math because of math and math thing. Uh, 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 mm, okay, so I will try to write it down to understand this how this is working. Okay, so this is math dot floor. So ये हमारा वो है कि हमें अपना फाइनल एलिमेंट चाहिए फर्स्ट जो हमारा लेवल है दिस वन. ओके, दिस इज ओके. नाउ जो हमारा नंबर है एक्चुअल उसको हम डिवाइड करेंगे math dot power. So 10 to the power math dot floor for math dot log 10. Math dot log 10. So 1 log log base 10 to 121. This is our original this is the original statement. Okay. So okay, you might not be able to see this. So मैं इसको try करूँगा इसमें लिखने का. So the original statement is 121 divided by 10 to the power log. यार नहीं करना मेरे को. log base 10 and 120 which is of 121. तो ये ओरिजिनल स्टेटमेंट है. इससे हमें हमारा जो आंसर आएगा और इसके बारे में मैथ डॉट पुट लगाया तो दिस विल बी समथिंग फ्रॉम 121 एंड इसमें मैथ डॉट सॉरी यार बड़ा मुश्किल है इस पे लिखना. मैथ डॉट फोर करके हमारे पास आ जाएगा 1. सो somehow we have to implement this in our code. Okay, let us see how we're going to do that. बहुत सारे टैब्स खुले हुए. आई थिंक दैट्स व्हाई बहुत स्लो हो रहा है. मैं टैब धीरे धीरे बंद करना स्टार्ट करूंगा बट टिल नाउ लेट्स सी. सो ये है स्टेटमेंट हमारा. इसको हम ले लेंगे कॉपी यहाँ से and we will try to put it here. So you know इसके बाद हमारे पास एक और चैलेंज है बट you know before that let's start implementing it. Okay, so for our number while लूप चला देंगे x is greater than 0. Okay, let right most element is equals to. तो right most हमने बात की थी. हम कैसे निकाल सकते हैं. It's just x by x mod 10. तो हमारा राइट मोस्ट डिजिट निकल जाएगा इससे. एंड लेट l is equals to x
by हमारा ये सेम math dot floor, instead of I we will just give the value x here and x. Now the issue, or what do I say, the the issue or the one more challenge that we face. So ये हमारा ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। if r not is equals to l, we'll just return false, because that's what we want to do, right? अगर ये हमारा कहीं भी मैच नहीं करते हैं लास्ट टू जो टू एंड्स वाला एलिमेंट है, वो हमारा मतलब हमारा नंबर पैलिंड्रोम नहीं है, तो रिटर्न फॉल्स। नाउ नो, अब हमें जो हमारा एक वैल्यू एक्स है उसको भी हमें मैनिपुलेट करनी पड़ेगा, राइट? बिकॉज इट्स स्टिल, बिकॉज बार बार हम लास्ट टू एलिमेंट्स कंपेयर नहीं करते, हमें रिमूव करना पड़ेगा। सो टू रिमूव द अगेन द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट रिमूव करने के लिए तो बहुत इजी मेथड होता है हमारे पास। लेट एक्स इज इक्वल्स टू 121/10। ओके, नाउ क्या हुआ, ये हो जाएगा 12, तो इसको कर देंगे मैथ डॉट फ्लोर। तो हमारा 1 निकल गया एंड से, तो ये हो गया 12। अब स्टार्टिंग से 1 निकालने के लिए ये हमें देखना पड़ेगा हाउ वुड वी डू दैट। स्टार्टिंग से 1 निकालने के लिए, सो डॉट पावर मैथ डॉट पावर, आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम हमारे प्लेग्राउंड से, इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग दिस, मेरे को बस इस स्टेटमेंट की में कितनी वैल्यू आ रही है जिसने ये वॉट एवर द स्टेटमेंट इज गिविंग अस। कंसोल डॉट लॉग, ओके, मैथ डॉट पावर 10 to the power मैथ, ओके, so i's value is 121, so let's see, it is giving us 100। okay, now very good man, this is what we wanted actually. So now what we will do, we are getting 100 for this, so uh, we will remove our, we will subtract our ith value, we will subtract this 100 from our ith value, so we will get the remaining one, right? So in this case for 121 we are getting 100, but इस केस में हमारा ये 12 ही रह जाएगा, right? So we will get 10, and when we will subtract 10 from 12 we'll get 2, that is our middle element only। और हमारा जब मिडिल एलिमेंट बचा है, so we will get that if x is, while x is less than 10, right? हाँ, so I'll tell you why did I do this, let me write this code once, right? So x is this, now let, no, why I'm writing let x, because x is already declared, and then x is equals to this math value, no, x is equals to x minus this math, और यहाँ हो जाएगा हमारा x, और I think yeah that's it, and then in the end if everything passes we will return true। Let us try to run it and see if it ran fine or not, if it runs fine or not। एक केस गलत हुआ, कौन सा, x is equals to 10, why did it send true, so while x is less than 10, so ये हमारा तो ये होगा नहीं, सो इसने फॉल्स एक्सपेक्ट किया था क्योंकि ये तो पैलिंड्रोम नहीं था, दैट इज फाइन, बट हमने हमारे प्रोग्राम ने ट्रू रिटर्न क्यों किया, सो वी विल एंटर दिस x%10, सो राइट हमारा आ जाएगा 0, लेफ्ट हमारा आ जाएगा मैथ डॉट फ्लो। सो लेट अस सी अगर हमारे 10 की वैल्यू में क्या आ रहा है, 10 की वैल्यू हमारा 1 ही आ रहा है, तो दैट्स फाइन। व्हाई डिड इट नॉट रिटर्न, व्हाई डिड इट रिटर्न ट्रू, बिकॉज यहीं पर हमारी r की वैल्यू और l की वैल्यू सेम नहीं है ना, r नॉट इज इक्वल्स टू l, तो रिटर्न फॉल्स हो जाना चाहिए। सो टेक्निकली फॉर दिस इट शुड बी ट्रू, r की वैल्यू हमारी %10, x%10, 10% 10 is how much, okay ये ट्रू आ रहा है, that means it's something we are doing wrong, or what, yeah, no, sorry, not this, uh let's try, what is, for a moment हम इसको remove कर देते हैं, let's try 10%10, I totally forgot modding, so मेरे को modding करना आइडिया नहीं है, let's see 10%10, sorry my bad, so it is 0, 10% 10 is 0, that is totally fine, हमें 0 चाहिए, and ये 1 ये आया हमारा दूसरी वैल्यू 1,
एंड हाउ इज इट मैचिंग अप देन, ये ट्रू कैसे आ रहा है यार, लेटेस्ट चेक वाई ट्राई कंसोल लॉग, console dot log x is less than console log right and left, it should be left and right. Oh, let's see. ओके सो आई थिंक आई गॉट द इशू, ये इस लूप के अंदर एंटर कर ही नहीं रहा यार, बट वाई, हमारी x की वैल्यू है 10 एंड while x is greater than 10, right? What I मैंने उल्टा वो लिख लिया था. So as long as our value of x is greater than equals to 10, that means हमारा डबल डिजिट नंबर है जब तक हमारी x की वैल्यू, so this will try to run it. And as long as ये सिंगल डिजिट हो जाता है, that means now it is palindrome itself. So I think this will run fine now. Let's check. Okay, second case हमारा गलत हो गया. So for negative elements, how I need to check, हम देखते हैं कोई negative negative could you solve without using converting integer to the thing, that's fine. From left to the right it reads minus one, from right to the left it reads okay. So because every time यार negative elements तो कभी हो ही नहीं पाएंगे because हमारा first में जो minus sign आ जाता है. So ये हमारा एक base case हो गया. If x is less than 0, we will return false. Okay, now let's test it. Okay. ओके सो तीनों हमारे केसेस पास हो गए. नाउ आई होप हमने सारे बेस केस कवर कर लिए, बिकॉज लेट अस ट्राई टू सबमिट इट. ओके, कोई केस गलत हुआ. ऑलमोस्ट हमारे सारे टेस्ट केस पास हो गए, कुछ केसेस गलत हो रहे हैं, बट लेट्स चेक व्हिच वन आर दोस स्टैंडर्ड आउट 1 1. ओके सो ये हमारा पैलिंड्रोम नहीं है, वी कैन सी दैट इज फाइन, बट इसने ट्रू रिटर्न किया है. व्हाई इज दैट? ये यहाँ से वन निकाल लेगा, यहाँ से वन निकाल लेगा, देन यहाँ से ओ ओके. सो व्हाट इज हैपनिंग, एज लॉन्ग एज ये क्या करता है, ये वन और वन यहाँ से निकालते ही this value becomes 0 0 0 0 0 2, that is equals to 2 and that is less than 10. So what it is taking it after removing 1 and 1, it is taking it as 2. So overall ये value what it is reading it as 121, so which is palindrome, but this value is not palindrome. ओके सो या ये केस हमने ध्यान दिया ही नहीं यार, इसमें लीडिंग जीरोस अगर आ जाएंगे तो कैसे हैंडल करेंगे. हाउ कैन वी हैंडल लीडिंग जीरोस, ये एक स्पेशल केस है. दैट्स व्हाई आई थिंक ऑलमोस्ट हमारे ऑल सारे केस पास हो गए, बस एंड के 5 बच गए. उन सब में लीडिंग जीरोस होंगे. हाउ वुड वी डू दैट, लेट्स सी. लीडिंग जीरोस कैसे निकल सकते हैं, लीडिंग जीरोस यार हमें टू टू सेट दैट कंपैरिजन हमें ये तो करना ही पड़ेगा यार कि वी हैव टू we have to we have to remove the first most significant and last significant every time, that then only हम next area में move कर पाएंगे in our current implementation. That's what we are thinking. But इस केस में हम क्या कर सकते हैं, ये as long as ये यहीं पर जो जैसे ही हमने इसका लास्ट एलिमेंट रिमूव किया, राइट, सो what we are doing is that we are subtracting the current. So ये मैंने पहले वन रिमूव कर दिया इसमें. ओके सो वन रिमूव करके लेट मी चेक. ओके जस्ट अ सेकंड गाइस, सॉरी अबाउट दैट गाइस. ओके हाँ हम लोग इस पे रख देना, इस वाले इसके टेस्ट केस पे. सो हाउ कैन वी हैंडल दिस, अरे मेरे को समझ में नहीं आ रहा लीडिंग जीरोस को हम कैसे मैनेज करेंगे यार. हम लोग उसको वो करे थे, राइट.
सो इट वॉज, ओके मैं भूल जाता हूँ टेस्ट केस देखना। इट इज वन, 4 times 0 2 1, सो 1 0 0 0 0 2 1। सो पहले उसमें हम निकाल लेंगे 1, सो इट विल बी 1, ये हमारा चला जाएगा, सो इट विल बी दिस। ओह, ओके। नाउ सेकेंड इटरेशन में हमारे ये वैल्यू है, सो इसको अगर मैं लॉग करूं, ओके, दैट मीन्स जो जो लॉग से है हमारा टेक्निकली आना चाहिए 1 0 0 0 0। हाँ, सो इशू यही आ रहा है कि ये इसमें माइन लीडिंग जीरो इसलिए हट रहे हैं क्योंकि ये 10,000, फॉर फॉर एग्जाम्पल ये है 1 लाख, 1 बाई 150, एंड ये इसमें ये माइनस करेंगे तो ये हमारे एंड में आंसर 2 ही आएगा। सो आर इज इट करेक्ट और व्हाट? टेक्निकली हम इसमें नंबर्स नहीं देख रहे हैं ना, हम पैटर्न देख रहे हैं, सो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दिस इशू। सो ये वाला हमारा फंक्शन शायद यहाँ पर वर्क ना करे फॉर दीज केसेस, क्योंकि इसमें माइनस करते ही हमारी वैल्यू ही चेंज हो जाती है ना, राइट? लीडिंग जीरोस वाली वैल्यूज हमारी इस वाले फंक्शन के लिए ये काम करेंगे। दिस इज अ गुड फंक्शन, ये बहुत अच्छा है यार, इसमें इसको वी कैन यू कैन रिमेम्बर if you are working somewhere to get the last significant digit out, but as long as हमारे पास leading zeros वाले क्वेश्चन आ गए, then this will not work because hmm, so hmm, how can we manage this, ये हमें सोचना पड़ जाएगा यार। How can we manage this? How we have to think about it? uh, 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 क्या हमें हमारे ये फंक्शन, क्योंकि वी कैन सी राइट बहुत ऑलमोस्ट सारे टेस्ट केस इससे पास हो ही गए, ओनली दीज केसेस, सो इसके लिए क्या हम स्पेशल केस बना दें? कैन वी फॉर लीडिंग जीरोस, बट जस्ट फॉर 5 टेस्ट केसेस ऐसा होगा तो नहीं। टेक्निकली हमारा कोड सब कुछ जनरली हैंडल करना चाहिए, इट्स नॉट लाइक तुम किसी टेस्ट केस के लिए स्पेशल वो बना दो, बट वी हैव टू थिंक अबाउट इट। टू एंड देन लीडिंग zeros, that is why इस क्वेश्चन में कैच ही यही है, राइट? It is asking you to solve it without converting it into a string, right? Uh, I think um, even by converting it into not a string, but the way we were talking about earlier, right? कि हम इसको array में convert कर देंगे, so ये प्रॉब्लम तो हम फेस करते हैं, क्योंकि अगर हम इसको array में कन्वर्ट करना स्टार्ट करते, we have to we still would have to use this method only, and इससे भी हमारा जो array बनता है इसका, that would be equal to 121, right? So that is not right actually, हाँ। So 121, राइट, 121 में क्या कर सकते हैं हम? तो 21 विल बी, इफ वी पुट दैट अप, सो ये वन रिमूव कर देगा, 121 हो जाएगा। सो आंसर तो सब भी सेम ही आना है, इवन इफ रिवर्स द ऑर्डर। दिस इज एक्चुअली वेरी गुड टेस्ट केस यार, इसने बहुत अच्छा फंसाया है, एंड इसके लिए व्हाट वी कैन डू, मेरा दिमाग नहीं चल रहा इसके लिए। 1021 leading by 4 zeros then 2 1 विदाउट कन्वर्टिंग इनटू स्ट्रिंग कैसे करेंगे यार? क्योंकि सो लेट्स रोल बैक अ लिटिल बिट। सो हम इसमें क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट आफ्टर कंपेयरिंग दीस, हम ये दोनों एलिमेंट आउट करते हैं एंड देन उसे कंपेयर करते हैं, एंड देन वी एडेड द वैल्यू ऑफ एक्स बाय रिमूविंग दीज टू एलिमेंट्स। सो प्रॉब्लम वही हो रही है, एज लॉन्ग एज एज सुन एज यू रिमूव दिस वन, ये वैल्यू चेंज हो जाती है, इट टर्न्स इनटू 2, बट टेक्निकली इट्स नॉट 2।
in terms of pattern ये है 00002 which is not palindrome. So problem यही start हो रही है. So can we stop it? Can we not remove these two elements? कि ये हम जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं ये हम ना ही करें. मैट डॉट फ्लोट टू द पावर 10 टू द पावर मैट डॉट फ्लोट ये क्या कर रहा है, ये x की वैल्यू पे ऑपरेट कर रहा है, राइट. So whatever value it is fetching us, it is doing on on the the value of x itself. So ये पूरा फंक्शन, ये वाला फंक्शन हमें रिटर्न कर रहा है x की वैल्यू कि x हमारा कितने पावर, कितने टेंथ के कितने पावर में. सो इन दिस केस इट्स लाइक 1 zeros 2 0 3 4 5 6 10 to the power 6 है ये. एंड सो हमें ये यहाँ पर रिटर्न करता होगा 6 एंड उतना ही वैल्यू का हम इसमें वो माइनस कर दे रहे हैं, राइट. नाउ नाउ टू not remove that, I think what we can do is that instead of changing x itself, हम क्या करेंगे, uh, we will to get the value of left, left palindrome, uh, to get the value of left, that means the left, uh, to get the value of these left values from the left, what we will do, we will use x itself, and to get the value of right, we will not use x but a similar element, similar variable that we will store our value inside x. Okay, so for example, let me take it as a temporary. To temporary is equals to x. So now, so to get the to 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 get the right value, I will be using temp. But to get the left value, I will be using x itself, and I will explain you in a minute. So ये हमें इनसे मिल जाएगी, then we हम compare कर देंगे. If they're not, then we'll return false. Now here, instead of changing x, I will change temp. So temp को मैं change कर दूंगा to reduce left value by 1, and uh, for that x, right. So now to get this value of x, तो हम यहाँ x यूज नहीं करेंगे. इंस्टेड ऑफ हम यहाँ यूज करेंगे हमें कौन सा एलिमेंट चाहिए. सो हियर द वैल्यू ऑफ एक्स, not only the value of this whole value is the representation of the 10th power of this value of x, right. uh to fix that, what we can do, 10th power पे ये कर रहा है, तो what we can do to fix that, uh instead of x, what we can do. So let us get back to our playground once. Okay, so this whole function I by this thing, and our value is 121. Okay, this thing this thing is giving us 100. So इसने हमें वही value return की है, what is the power of 121. Okay, this whole thing is returning us that. So if I just uh if I'll just, so इसमें पहले हमने देखा था कि ये mod return कर रहा है, right. इसने 1 return किया. अगर मेरे को यहाँ पे 2 रिटर्न चाहिए, तो हाउ विल आई अचीव दैट इन दिस. सो अगर मैं ith की जगह ith में कर रहा हूँ तो मेरे को 100th वैलिडेट रिटर्न कर रहा है, राइट. बट अगर मैं इसको चेंज करके मेरे को इस पोजीशन वाला चाहिए, बट हाउ विल आई रीच नंबर ऑफ डिजिट्स, ये मेरे को 100 मिल ही जाएगा इसमें, राइट. 100 इज 10 टू द पावर 3. हाँ, सो आई विल टेल यू, लेट मी डू सम रिसर्च मैन. थोड़ा शांति से रिसर्च करने में चीज़ें समझ में आने लगती है. तो कंसोल डॉट लॉग math.log 10 and 121. What does this give us? 2 point something something. So math.log
what will give us 100, so this will give us 2, right? That means हमारी इसकी वैल्यू 2 है, so इसके नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने के लिए what will I do? I will use this inside math.log. Okay, so this is start get this is getting complex, but just a minute, guys. ठीक है दोस्तों, ओह कैमरा बंद है, सॉरी। ओके, यार काफी लेट हो गए हम लोग, वो वाला प्रॉब्लम कर रहे थे and उसके बीच में बहुत तगड़ा गैप आ गया, बट या लेट्स गो बैक। सो मैंने इन बिटवीन ट्राई किया था, सो ये रहा हमारा ओल्ड मेथड जो हम ट्राई कर रहे थे। सो इसकी वजह से 5 टेस्ट केस फेल हो रहे थे। सो मेरे दिमाग में एक नया आइडिया आया कि व्हाट वी कैन डू इज, you know what we were doing here in this function. So if I go back to this, so this function was returning us the nearest 10th power of the value x, that was the input. So हमने क्या किया, if you just do a log of that and then floor it, then you will get the number of zeros, leading zeros, number of zeros, that is 10 to the power whatever it will be of the nearest 10th multiplication of that number. So for example, हाँ for one of these input, right, हमारा टेस्ट केस फेल हो रहा था, so इसमें if you try to find the nearest 10th power number, so it will be 10 and the number of zeros after it. So this is the nearest one. Okay, so this whole function was actually returning us this. So here actually see we are using power function over 10. So this is the number of zeros for in this number. So we can write this number as 10 into 10 to the uh, 10 to the power 6, right, because there are 6 zeros. So this is the number, right? So ये 6 नंबर हमें इससे मिल जा रहा था. So what I was able to think, right, जो हमारी करंट नंबर है इसमें हम 1 by 1 एन डिजिट निकालते रहे एंड देन इस नंबर से मल्टीप्लाई करते रहे जिसमें इस डिजिट की वैल्यू डाउन होती रहे. फॉर एग्जाम्पल 1 into 10 1 into 1 lakh 1 into 10 to the power 6, so it would be like 1, right, 1 more 6. Okay, then 2 into 10 to the power 5, तो 2 यहाँ आ जाएगा. Then 0 0 0 is 0, so it is directly added here. Then we have 4 zeros and then 1. So 1 into 10, ये तभी माइनस होता रहेगा, तो it will be 4 3 2 1 and then 1 end में आ जाएगा हमारे. So we have somehow reversed the number, and by this manner what we can do is, अगर रिवर्स करने के बाद हमारा ये नंबर और ये नंबर सेम रहे जो कि इनपुट था, देन इट्स पैलिंड्रोम, राइट? सो विद द सेम थिंग यू कैन सी आई डिड, हम लोग एन का नंबर निकाल रहे हैं, उसको आंसर में ऐड कर रहे हैं, जो पावर की वैल्यू को कम कर रहे हैं, एंड देन एक्स की वैल्यू को हम एक एंड वाली एलिमेंट निकाल दे रहे हैं, राइट? सो ये वाला इम्प्लीमेंटेशन बहुत छोटा है, एंड ये एंड में हम इसको रिटर्न कर दे रहे हैं आंसर और जो हमारी करंट वैल्यू थी उसको कंपैरिजन. तो अगर इफ इट इज इक्वल देन इट विल बी रिटर्न ट्रू और एल्स फॉल्स. तो ये सबमिशन वर्क कर गया, एंड रन टाइम तो काफी अच्छा नहीं आया, इवन मेमोरी बहुत खराब है, 18% एंड 5%, सो इट्स नॉट गुड. आई एम नॉट श्योर ये सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं था, हमने कुछ मिस कर दिया. प्रोबेबली क्यों हो सकता है ऐसा कि ये इतना खराब रन टाइम आ रहा है, व्हाई इज इट? Just a second, guys. Okay. So okay, we'll check it out later. So actually सॉल्व तो हो चुका है, मीन्स हमारा ये वाला सोल्यूशन सही है, बट why the run time is so bad, we have to find that out. Okay, पिछले वाला इम्प्लीमेंटेशन भी ठीक था जिसमें 1 to 1 पेयरिंग हो रही थी, 1 to 1 मैचिंग हो रही थी, बट वही लास्ट वाला एक इशू आ गया, राइट, पावर वाला, बिकॉज रिड्यूसिंग द नंबर वाज फोर्सिंग अस टू इस टाइप के नंबर पे जब हम 1 को हटाते थे लेफ्ट साइड से तो ये पूरा नंबर ही चेंज हो जाता था. मीन्स ये 1 हटाते ये नंबर 2 बचता था एंड में.
ये इशू हो रहा था, बट यार दिस इज फाइन नाउ। सो ये इम्प्लीमेंटेशन ठीक है, बट विल वर्क ऑन इट लेटर टू इम्प्लीमेंट टू इम्प्रूव द रन टाइम ऑफ फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, राइट नाउ आई थिंक वी आर डन। काफी टाइम लग गया यार इसमें करने में, बैठ के आज बहुत ज्यादा काम आ गया था बीच में, तो आज बैठ के अच्छी तगड़ी स्ट्रीम हो नहीं पाई। But yeah, we'll do stream. We'll stream again. I will try to stream even in working days like Monday, Tuesday, tomorrow, day after tomorrow. It doesn't mean that only weekends पे कर सकते हैं, but let's see. अगर टाइम मिला तो वर्क डे से भी स्ट्रीम करेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो आई एम एंडिंग इट हियर। सो हमने लेट इट लोड। सो हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया, कहाँ गया पैलेंड्रोम नंबर। एंड काफी सारे क्वेश्चन बचे हैं यार, हम बहुत स्लो चल रहे हैं एक्चुअली हमारे शेड्यूल से। वी हैव टू बी अ लिटिल मोर फास्ट इन दिस, बट या विल डू दैट। ओके गाइस, बाय।